Good morning, dear children. Welcome back to the online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. Children, in the previous classes, we have already learned about how we celebrate Christmas, isn't it? So, बच्चों, आप लोग कैसे क्रिसमस मनाते हैं? क्रिसमस की खुशी का असली राज तो बच्चों के लिए सांता क्लॉस है। बच्चों को सांता क्लॉस से मिलने वाले उपहारों के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। That means क्रिसमस की खुशी, खुशी means happiness, का असली राज, real secret. Here is a secret about the happiness of Christmas. What is it? बच्चों के लिए सांता क्लॉस है। The main thing or the secret, real secret is about Santa Claus. बच्चों को सांता क्लॉस से मिलने वाले उपहारों के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है, isn't it? बच्चों को, for the children, it is a very great pleasure for the children to get what gift from the Santa Claus. That is, मशहूर means famous. 14वीं शताब्दी में टर्की के एक बिशप थे सेंट निकोलस, and 14वीं शताब्दी in the 4th century there was a bishop and his name was Saint Nicholas. वे बच्चों का खूब ध्यान रखते थे. He loves the children very much or he cares the children very much. अक्सर वे बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार देते थे. So he frequently gives gift to the children. उपहार means gifts to the children. वे पहले यह पता लगाते थे कि किस बच्चे ने कौन सा अच्छा काम किया है. So before that he wanted to identify the children. किस बच्चे ने कौन सा अच्छा काम किया है. Who did the good job? Which child did the good job? And उसे उपहार दिया जा सके. And he gave gift to those children. ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाकर वे एक चोगा पहनकर अपने सहायकों के साथ निकलते और उन बच्चों को उपहार बांटते. And then later what he did, Santa Claus, Nicholas and Nicholas, and he used to make the list of these children. That means who did the good jobs or good works. And he made the list of these children and एक चोगा पहनकर, चोगा means here robe, dress, gown, like that. चोगा पहनकर, he wears that dress, अपने सहायकों के साथ निकलते और उन बच्चों को उपहार बांटते. And he comes with his friends or assistants and gives the gift to the children. That he had already made the list of the good children. धीरे धीरे means slowly उनका वह तरीका पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया. So in this way Santa Claus, Saint Nicholas gave gift to the children. And after that पूरा means complete. पूरे विश्व means whole world. In the world में प्रसिद्ध हो गया. दिस कस्टम, यह तरीका, इस प्रकार यह तरीका पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया. दैट मीन्स गिविंग द गिफ्ट्स. आजकल जिस सांता क्लॉस की हम कल्पना करते हैं उनका चेहरा मीन्स फेस इन संत निकोलस से काफी मिलता है. सो द सेम फेस ऑफ नाउ we feel the face of Christmas Santa Claus. Which face was that? Yes, it was really Sant Nicholas. इनके face, इनके चेहरा है. That means when we remember Santa Claus, the face comes in front of us. Of whom? Yes, Sant Nicholas के. और इस त्योहार की बहुत मजेदार बात यह है कि what is the मजेदार बात? So here the Christmas became very famous and now we are celebrating Christmas. And इस त्योहार की बहुत मजेदार means great thing about this
festival is that 24 December ki raat ko, and when 24 December 24th December ke raat, on the night of December 24, बच्चे अपने मोजे बाहर टांग देते हैं. Children, what they are doing, children, they moze means socks. The socks of the children, they hang their socks outside. The children hang their socks outside. बच्चों के सो जाने पर उनके माता पिता उन मोजों से बच्चों के लिए उपहार डाल देते हैं. So the children, after that the children sleep, and after that their parents, the children's parents, came outside and filled these socks with gifts. The children's parents filled the socks with some gifts. And सुबह बच्चे समझते हैं कि सांता क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गए हैं. And in the early morning, children woke up and when they look at these socks, they could see what? Yes, there are the gifts inside the socks. And what they think about that gift? Yes, of course, they thought that these gifts were given by Santa Claus. Okay, so in that manner, the children believed. This was the belief of the children. And ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कई महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. ईसाई धर्म, that means Christianity. ईसाई धर्म religion. ईसाई धर्म means Christianity. को मानने वाले लोग कई महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. That means the people began their routine or began their preparations for the Christmas festival months before. Okay. And how they celebrate? लोग नए कपड़े बनवाते हैं. They stitch new dress for them and पहनते हैं. Wear the new dress. रात भर पार्टी करते हैं. Complete night. And 24th night they celebrate by conducting पार्टी करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं तथा उपहार देते हैं. They wish each other शुभकामनाएं. Happy Christmas, Merry Christmas, like that. That is शुभकामनाएं. एक दूसरे को शुभकामनाएं तथा उपहार देते हैं. They give gifts each other. Christmas gifts. इस उपलक्ष्य में विशेष क्रिसमस केक जरूर बनता है. इस उपलक्ष्य में मीन्स ऑन दिस ओकेशन क्रिसमस केक, विशेष क्रिसमस केक, स्पेशल क्रिसमस केक. they make special क्रिसमस केक on this occasion. आज तो यह त्योहार जो ईसाई नहीं है वे लोग भी बहुत जोश के साथ मनाते हैं. So today not only Christians but also all the people belonging to other religions also, they will celebrate Christmas with great happiness and joy. जोश के साथ with great joy they celebrate Christmas. All the people, not only the Christians but also all the other people in other religion. It means all the people celebrate Christmas. Okay children, so let us wind up today's session. Read the textbook and study the notes I have attached with this, and do the test paper and post it. Okay, so see you in the next class. Bye. Have a nice day.